Welcome back once again for accounting for special transaction unit number 1, bill of exchange and promissory notes. Today we are going to see all examples and all questions of study material. So please be prepared for it. And before that, today we are going to see some journal entries. So I'm going to ask you some entries regarding bill of exchange and promissory notes. So before that, yes, our accounts is divided in two parts, traditional approach and modern approach. Traditional approach talks about, so traditional and modern, Tarak Mehta yaad rakhna, TM, traditional and modern. So traditional approach talks about number one, personal account, debit, due relationship, debit the debtor, credit the creditor, and receiving giving relationship, debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit, what comes in, credit what goes out, and nominal account debit, all expenses and losses, credit all incomes and gains. In modern approach, you are aware about the modern approach that is divided in the 5 parts. Asset is debit balance, liability credit balance, expenses is debit balance, income credit balance, and capital credit balance. Asset minus liability is equal to capital, and income minus expenses is equal to profit, and expense minus income is equal to loss. So before starting today's session, first I will revise you bill of exchange, all journal entries. So you can now see here all bill of exchange entries. Please recall it with me. So first recalling, and then I'm going to ask you some questions regarding bill of exchange. So 3 to 4 entries I'm going to ask you. Okay. So today, before starting today's session, yes, first entry in the books of drawer. So drawer means a person who draws a bill, and drawee is a person who accepts the bill. So drawee is normally buyer and drawer is normally seller. So drawer kaun hota hai? To seller hota hai, and drawee normally he is a buyer. But in accommodation bill, there is no relationship of buyer and seller. Normally, when both parties are in need of funds, they draw bills on, one party draws bill on another party. So that is accommodation bill. So beta drawer, yes, first one in the books of drawer. What is the first entry? Drawee or debtor account debit to sales. Debtor means drawee only, debtors to sales. Then second entry. So first we will finish with the drawer entries. Debtors to sales, but debtor does not have money, therefore he accepts bills. So bills receivable account debit to debtor. Here you can understand that debtor account will get cancelled and bills receivable account will be debited. After that, bills receivable account debit hone ke baad, third entry will be, normally there are 4 situations. Now do you remember these 4 situations? Number 1 is a retain, second one is discounted, third one is endorse, and fourth one is bill sent for collection. So bill sent for collection is the next situation. Return beta, there will be no entry in case of return. Then in case of discount, bank account debit, discount account debit to bills receivable, and now bill is with bank. Okay, so bill balance is getting cancelled, but bill is with bank, and here bill is with us only. Bill is with drawer only. Okay. Now, endorse के केस में bill चला जाएगा creditor के पास, so bill is with creditors, so bills receivable balance is getting cancelled. Remember, bills receivable balance is getting cancelled, so there is no bills receivable, but now your creditors also getting reduced. And bill sent for collection, भाई लोगों को बुलाया है, agency will be appointed, so bill sent for collection account debit to bills receivable. Here is also bill with agency and not bill is with beta drawer. Okay, so now there are 2 situations on due date, whether bill is getting honor, and second one is whether bill is getting dishonor. So in case of honor, there will be entry bank account, because bill is with us, so we are getting bill amount, so bank account debit to bills receivable. Remember, in case of discounted bill, there will be no entry because bank has that bill, and bank drawee honor that bill, so there is a transaction between bank and drawee, so our involvement is 0 here. No entry in endorsee case, same logic. Credit bill is with creditors, and therefore creditors now will ask to drawee for amount, and no entry in the books of drawer. And last entry will be bank account debit to bill sent for collection. So those students who attended my last session, yes, they understood these all entries very easy. And dishonor ke case mein entries hongi. Dishonor ke case mein there are 4 entries. Number 1, in case of dishonor, yes beta, what is the debit? Drawee account is always debited. Drawee. In all situations, drawee will be debited. In first situation, bills receivable is getting cancelled. Second situation, we have to pay to bank. Third situation, we have to pay to creditors, and last situation, bill sent for collection account will get cancelled. So these are all entries in the books of drawer. And now in the books of drawee, first entry will be purchases account debit to creditors. As you are aware, creditors account debit to bills payable. Bills payable is now account open, and creditors account will get cancelled. So on due date, drawee is not concerned with your 4 situation, and on due date whether he will honor that bill, so bills payable to bank, and he dishonor hoga to bills payable account debit to creditors or drawer once again. So all these entries very easy. So now questions, 3 questions for my dear students.
Yes, let's see who is answering very fast. CRO, WRO, NRO, देखते हैं आज कौन जीतता है. So जल्दी से तैयार हो जाइए आज के क्वेश्चंस के लिए. जल्दी से तैयार हो जाइए. चलो चलो फास्ट तैयार हो जाइए. यस, गुड मॉर्निंग बेटा ऑल ऑफ यू. रितु तिवारी जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग आज भेजा है. केशव ने, प्रमोद जी, आयशा, गुड मॉर्निंग. डिम्पल बेटा, चलो अभी गुड मॉर्निंग बाद में करते बैठते. सो वीडियो इज लैगिंग ऐसा बोला गया है. आई डोंट थिंक सो. स्वातिगिरी, गुड मॉर्निंग बेटा. चलिए सो जल्दी से आज का सेशन चालू करने के पहले. यस, रेडी एवरीवन. डिम्पल इज रेडी. चलो जल्दी से बोलो. फर्स्ट एंट्री, बिल एंडोर्स. ओनली बिल एंडोर्स. लेट्स सी हु इज आंसरिंग फास्ट. बिल एंडोर्स, जल्दी से विदाउट लुकिंग इनटू बुक, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए. यस, बिल एंडोर्स. जल्दी जल्दी जल्दी. हु इज द विनर? बिल एंडोर्स. मुझे आंसर चाहिए बिल एंडोर्स का. क्वेश्चन 1, बिल एंडोर्स. And first answer we got from साधना सिंह. साधना जी, सीआरओ स्टूडेंट्स. बेटा सीआरओ में कहां से हो साधना जी? आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. साधना जी इज अ विनर. बिल एंडोर्स. यस, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. एंड आफ्टर दैट अनमोल पटवा ने आंसर दिया है, आयशा ने आंसर दिया है, एंड एवरीवन आंसर इट करेक्टली. वंदना ने भी आंसर दिया है. वेरी गुड बेटा. सेकंड क्वेश्चन टू यू. चलो 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 फास्ट. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर इज सीआरओ. साधना इज अ विनर. चलो वेरी गुड. और सबसे डेंजरस टीना ने आंसर दिया सर नो एंट्री. बेटा टीना, बिल एंडोर्स ऑनर होता था तो नो एंट्री होता था. टीना प्लीज यूर बेसिक्स हैज टू बी इंप्रूव्ड. सो आपको थोड़ा सा आपके बेसिक के ऊपर ये ध्यान देना है. साधना बोल रही है सर बिहार से. वेरी गुड बेटा साधना. ओके चलिए वेरी गुड. कहां कहां से आप लोग जुड़ जाते हो मेरे सेशन के लिए, धन्यवाद और थैंक्स टू बोर्ड ऑफ स्टडीज. जल्दी से सेकंड वन. यस, सेकंड वन. चलो रेडी. सेकंड क्वेश्चन के लिए. बिल एंडोर्स तो हो चुका है. बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर. बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर. लेट्स सी हु इज आंसरिंग फास्ट. बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर. बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर. फटाफट प्लीज विदाउट लुकिंग इनटू नोटबुक यू हैव टू आंसर इट. लॉजिक, अप्लाई लॉजिक. Bill discounted is dishonor. Bill is not with us. Who will pay us and to whom we are going to pay? So who is the debtor and who is creditor? Please write down. Second one. Second. Second answer by. Yes. Second answer किसने दिया? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया. और प्रमोद के ने लिखा है नो एंट्री. और उसके बाद आयशा. यस बेटा, तस्नीम, एसआरओ स्टूडेंट. सो सेकंड आंसर बाय आयशा. और उसके बाद साधना सिंह ने वापस आंसर दिया है. सो सेकंड आंसर बाय आयशा, तस्नीम. यस बेटा, वेरी गुड. ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू account is the second entry. Drawing account debit to bank account. And last question. Drawing account debit to bank. Best Aisha. Aisha, city बोल दीजिए आपकी. Yes, can you tell me आपका city name? Next one and last one is bill endorse हो गया. Bill discounted dishonor हो गया. Last one. In the books of Drawey के books में, let's prepare it बेटा. Bill honor. Bill honored. Okay. On due date, bill honored by Drawey. Yes, beta. Very good, Aisha. Kapurthala. Okay. And last question by, let's see who is the winner of last question. Drawey books, bill honored. And entry answered by
Okay. Entry answered by Tanmit Kaur. Tanmit Kaur. Beta, Tanmit Kaur is from ERO. Very good, beta. Bills payable account debit to bank account. Very good. Bills payable account debit to bank account by Tanmit Kaur from ERO. So now there is no winner. CRO, SRO and ERO may say. So now last question to CRO students, SRO and ERO. I won't consider WRO and NRO students. Okay. So answer will be from SRO, CRO and ERO. Chalo. Competition mein last question because there is a tie between CRO, SRO and ERO. चलो तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. यस बेटा, सीआरओ एसआरओ ईआरओ प्लीज रेडी. लास्ट क्वेश्चन देखते विनर कौन है जल्दी से. तन्मित कौर कहां से हो बेटा आप? ओके. यस. ईआरओ में कहां से हो बेटा? जल्दी से. चलो. सो लास्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहना. सीआरओ एसआरओ ईआरओ. लास्ट क्वेश्चन इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर. Bill sent for collection honor. Yes. Bill sent for collection honor. ओडिशा से तन्मित जी. Yes. चलो फास्ट. BSFC. Bill sent for collection honored. And correct entry by Sadhna CRO. So winner is Sadhna. बिहार से हमारी साधना. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बहुत फास्ट किया था और फाइनली आंसर्ड बाय साधना ने. यस, जीत लिया. सीआरओ इज अ विनर. चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1. यस, कंपटीशन ओवर और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. चलो, ओपन योर स्टडी मटेरियल एंड ओपन 400 पेजेस नोटबुक. इफ आई थिंक एनी क्वेश्चन इज important one, I will take it in the lecture. Otherwise, you can take a screenshot of that question. C category question, I'm not going to take it in the class. C category question, I'm not going to take. Yes, prepare index of 4 pages. Index of 4 pages. चलो, index बना लो 4 pages का. 400 pages notebook. Yes. Try to attend it in the live session. Maximum students, I request you all, competition में participate करते रहिए and try to answer all my questions. Very good. Many students answered it. एक ही मिनट. चलिए. First question, yes, easy one or difficult one? Easy or difficult?
फर्स्ट वन इज इजी. क्या हुआ, इसको क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? Okay, let's start. Now, first question. Now, see, you are aware of all these entries. Now, first question, we have to understand what is bill matured on due date. Now, due date पे क्या होगा? On due date. Due date means, now understand what is due date and what is maturity date. So today, first, we are going to start with the concept of due date and maturity date. Very simple. Due date is, assume 1st April 2023 plus I have given you 3 months. So beta, due date will be April, May, June. Okay, so 1st April, May, June. So 3 months over means beta, our date will be April, May, June. So 1st July 2023. So due date is without adding grace days. So what is the meaning? Yes, you can write it in 100 pages notebook without adding grace days. Without adding grace days, it is called as due date. Okay, grace days means you are getting extra 3 days. Okay, what is the period? Grace days is equal to 3 days. Now this is mandatory. Okay, सो लॉ मेकर ने ये किया हुआ है. सो मैंने नहीं किया. ग्रेस डेज किसने लिखा हुआ है? लॉ मेकर ने 3 एक्स्ट्रा दिन दे दिए. देखो हम लोग भी परेशान रहते हैं, सर पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, चल ले 3 डेज एक्स्ट्रा. सो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा डेज. ओके, सो एक्स्ट्रा डेज जब दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेस डेज. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रेस डेज बेटा? सो grace days, so maturity date will be 4th July 2023. So maturity date for the same transaction will be 4th July 2023. Okay, no problem. So due date is without adding grace days. 100 pages के notebook में लिखो. And maturity date means extra grace days. I'm giving you 5 questions. I will tell you to how to calculate in case of months and in case of days. So beta, months में is very easy. April, May, June. So 1st July is a beta grace date. Due date. And without adding grace days, it is called as maturity date. So difference between due date and maturity date is that. But suppose in exam, if it is given that due date, you have to assume it is a maturity date. But there is one line difference. Due date or maturity date में difference क्या है? Without adding grace days, it is called as due date, and with adding grace days, it is called as maturity date. Okay, easy है. चलो, अभी मैं कुछ questions देता हूँ. 5 questions. Okay, first I will answer it. First question. Assume, yes बेटा. चलो, हर एक को उसका बर्थडे पूछता हूँ. सो फर्स्ट बर्थडे मैं पूछता हूँ. यस बेटा, तन्मित कौर. तन्मित बेटा, कैन यू टेल मी आपका बर्थडे क्या है? चलो, तब तक मैं मेरा बर्थडे लेता हूँ. आई एम विथ यू फॉर 24/7. सो 24 जुलाई इज माय बर्थडे. ओके, सो संकेत सर के इससे करेंगे. चलो, तन्मित का आंसर है 27 अप्रैल. 27 अप्रैल. यस बेटा, इस मंथ में आपका ये दिख रहा है. वेरी गुड. रुचिका, कैन यू टेल मी आपका बर्थडे? रुचिका बर्थडे क्या है आपका? चलो, रुचिका का तब तक मैं 24 जुलाई प्लस नहीं, ये मंथ में क्यों है बेटा? अप्रैल नहीं, जनवरी चल रहा है. सॉरी, मैं तो अभी फाइनेंशियल ईयर से ही चाह रहा हूँ. ओके, सो रुचिका. साधना, आपका भी बर्थडे बताओ. चलो, 60 डेज. संकेत सर के इसमें हम लोग ऐड करेंगे 60 डेज. See, I will tell you how to calculate this. 24 जुलाई. यस, मुझे आंसर्स नहीं आए बेटा. रुचिका, मैंने आपको पूछा आपका बर्थडे क्या है. रुचिका फ्रॉम CRO. यस, कुशल जैन ने अपना बर्थडे बता दिया. वेरी गुड. 8 सितंबर. साधना बेटा
14 जून एंड सबसे डेंजरस डेट यशवंत का है 26/11 26/11। अरे बाप रे, ठीक है चलो। रुचिका 18 सितंबर, वेरी गुड। चलो सितंबर मंथ मेरे लिए डेंजरस है, वाइफ का बर्थडे होता है उसमें। चलिए, यस, लेट्स अंडरस्टैंड। Now, how to add 60 days? Understand it. How to add 60 days? 24th July. I will tell you the technique. I will tell you the technique. 60 days ka technique. See, technique is very easy. Now, July. July is of 31st. Correct? Hai? July is of 31st. So 24th July to 31st July. Kitne days हुए? Yes, beta, 60 days. How to add? Very simple. You started with 24th July and 60 days. So 31st July means there are 7 days. So take on calci. Take on calci. 60 days minus 7 days. 60 minus 7. तो जुलाई के हो गए 53. अगस्त के कितने डेज है? 31. So deduct 53 मिला कैल्सी पे. 60 minus 7. Yes. Now deduct this. 60 minus 7. 60 minus 7. You are getting 53. 53 minus 31. 53 minus 31 is 22nd. So 22nd September. Yes. The answer is 22nd September. So what is the answer? 22nd September. And you can write this for your reference. You can write this for your reference. 24th July plus 60 days. तो जुलाई के कितने दिन बचे? 7 days. 7 days for July. August के 31. You have to deduct July के 7, then August के 31, and you are getting 22nd September. So this is your answer. Okay. So you can write for your reference. First answer is yes. Now let's see who is answering very fast for second one. Second one के लिए सबसे पहले आंसर कौन देता है? 123 days. 123 days. Let's see 123 days. चलो ऐड कीजिए फटाफट. Let's see who is answering fast. 123 days. Yes, 123 days. किसी ने तो भी आंसर दिया 53. 53 जून सितंबर होता है क्या बेटा? कुछ भी देते हैं आंसर बच्चा फाउंडेशन का. मनीष जैन, वेरी गुड बेटा. वेरी गुड. Answer is 123 days. 123 days. Let's see. 27th April plus 123. So 123 you can take it on calci. April के 3 दिन, 3 days for April. 28, 29, 30. 31 for May. June 30. July 31. Let's see. Yes, take on calci. 123 minus 3 minus 31 minus 30 minus 31. So you are getting 20th September. August. 28th August. Who answered very fast? 20th August.
Manish Jain from SRO. Who answered very fast? Manish Jain. बेटा मनीष कहां से हो? SRO. Yes, city. चलो, very good. 20th August. I hope those who are not getting the answer now they can answer it. Chalo, 8th September, 73 days. Answer, and please write 3 and your answer. Huh, beta? 3 and your answer. So number 3 and your answer. 73 days. 73 days. Bangalore se hai. Very good, beta. Manish ji from Bangalore, Sadhna ji from बिहार, ओडिशा से थे एक हमारे ERO वाले. Yes, try to recall your names. Yes. So first answer by सर्वेश क्यों रॉन्ग आंसर दे रहा है बेटा आज? सर्वेश जी रॉन्ग आंसर क्यों दे रहे हो? 8 September. 8 September plus 73 days. सितंबर बेटा 30 का होता है. सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो सितंबर बीच में आता है. सो 30 दिन. ओके, जो आपके यस अपर साइड पे आया तो इट विल बी 31, लोअर साइड इट विल बी 30. ठीक है, you know how to calculate this. So 73 minus 22 days for September, October 31, and let's see deduction karke 73. You can write these things beta afterwards if you don't know how to solve this. 31. So correct answer is 20th November. Yes, and correct answer by Pramod. Pramod, beta tell me your city name. Pramod ji is the first answer. 19th is wrong. 20 is correct. Next one. Next question. 14 June plus 103 days. 103 days. Chalo. 14 June plus 103 days. Pramod ji is a winner. SRO. SRO are good in mathematics. Write down 4th and answer. Huh? Sadhana, you are taking time better to calculate this. Are you finding it difficult? साधना एंट्री में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैलकुलेशन में नहीं हो रहा है क्या बेटा? कर्नाटका, बंदीपुर टाइगर रिजर्व. ओके, वेरी गुड बेटा. Oh my God, I'm getting very fast answer this time by Ayush Bansal. I don't know whether his answer is correct or not. Yes. But many students answered. Yashraj Gadekar, I think you are getting wrong answer. Sadhana, Sadhana calculation में mistake क्यों कर रही है बेटा? जून है, जून. Please don't do silly mistakes. 103 days in 14 June. 103. So June के बचे 16 days. Okay, June is off beta 16. July 31. August 31. So take on calci 103. 103 minus 16 minus July 31. August is also 31. September 25. So correct answer is 25th September. Correct answer is 25th September. 25th September is a correct answer.
Many students answered 26 September. So who answered very fast? आयुष बंसल. बेटा कहां से हो आयुष? CRO. Ayush answered it very well. Yes, beta. And last one. आयुष ने आंसर दिया सबसे पहले. Yes, beta. Many students answered, but आयुष ने सबसे तेज दिया. कुशल जैन. And last one थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं. 222 days. 222 days. Please don't make a mistake. 222 days. थोड़ा बड़ा है. 222 days. Let's see. Oh my God. Ayush is also from Bihar. बिहार के तेज लोग दिख रहे. चलो. Manish, I think you're wrong. मनीष रॉन्ग है बेटा शायद से. February 28 लेना. February टेक 28. मनीष जी ने फास्ट में गलत कर दिया. And this time answered by Ananya Kumari. Ananya Kumari from CRO. बेटा कहां से हो अनन्या? She answered 28 April. And I think this is the correct answer. Let's check it. 222 means September के 12 दिन. October 31. November 30. December 31. January 31. February 28. March 31. And then April. Let's check the answer on Calci. 222 minus 12 for September, 31 October, 30 November, 31st December, January 31, February 28, March 31, and you are getting the answer 20th April. Yes. Ananya ji. Ananya Kumari है, not Pandey. चलो बताइए अनन्या कहां से हो बेटा? वेरी गुड. अनन्या भी बिहार से. अरे बाप रे, बिहार तो एकदम तेज हो गया आज. ओके. सो अरे महाराष्ट्र वाले कोई आते क्या नहीं आते? एक है सिंह मदान. WRO कुछ है क्या? नहीं. ऐश्वर्या है, स्वाति गिरी है. चलो कोई तो WRO भी है. WRO वालों ने नाम खराब कर दिया बेटा. चलिए. ओके. सो टुडेज विनर बेटा CRO. नहीं, SRO भी टाइप पे है. चलो कोई बात नहीं, रहने दीजिए अभी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. आई होप यू एंजॉयड. यस बेटा अरविंद, आपके भी आंसर्स दिखते हैं, डोंट वरी. Yes, beta, everyone, I can see your answers, but there are many students who are answering, more than 100 students, so it's very difficult to answer all your questions. Okay, I hope you got this. 100 pages के book में लिख दिया होगा आपने. Yes, Ritu Tiwari बोल रही है, very easy technique. Very good, beta. So you got now due date versus maturity date. So due date versus maturity date, you understood it. Now, beta, let's understand concept of. So I explained you what is terms of bill. This is called as terms of bill. Now there are two terms, after sight and after date. You can write it in your 100 pages notebook. So terms of bill, you can write it. Terms of bill
divide it in two parts. So this is how you have to write your notes after sight. Please read your study material thoroughly for other subjects also, for law, economics, and prepare such types of notes. After sight and after date. What is after sight? After sight is date of seeing that date. Okay. Whenever bill is accept कब होगा? Whenever drawee, yes, drawee जब बिल निकालता है या एक्सेप्ट करेगा, व्हेन ड्रॉई साइट जब होगा तब वो आफ्टर साइट होता है, जब ड्रॉई देखेगा, ओके. ड्रॉवी एंड आफ्टर डेट इज बिल इज ड्रॉन. जब ड्रॉवी देखेगा और जब ड्रॉ करेगा ड्रॉन बाय ड्रॉवर. Okay, so your term starts. When after sight. After sight means when it is looked by drawee, जब drawee उसको देखेगा, and after that जब drawer bill निकालेगा. So दोनों terms में normally we consider after sight. Okay, if nothing is mentioned then it is after sight. Next one, expiry. Expiry means due date. And grace days add करके जो होगा, that is maturity date. Bill at sight when no due date. Next one is bill at sight, payment on bill received by drawee. So there is no period. Okay, so here no period is given. Whenever bill is presented to the drawee, it is beta payable. No period, no due date में date extra days नहीं मिलेंगे. That is at sight. And after date I already explained you. How to calculate due date? Beta already explained you. How to calculate that date is not considered when bill is drawn, so we already calculated. Now what is noting charges? Yes, लिखा ये इतना लिख दिया सबने. 100 पेजेस बुक में लिख दो. Any difficulty till now? No. Yes बेटा, मनीष जैन, 3 grace days fix होता है. 3 grace days are fixed. No more, not more than 3 days. This is fixed, 3 grace days. Now what is noting charges? Suppose, write down noting charges. Write down what is noting charges. If bill is dishonored, noting means beta bank charges. In simple language is like bank charges. Okay, noting charges is like bank charges. Okay, so bill is dishonored. Last holder of bill has to pay, means that will be notarized. Notarized सुना होगा ना आपने, नोटरी करके लाते हैं हम लोग. नोटरी किया तो उसको देखो लीगल एग्रीमेंट्स होंगे तो उसको नोटराइज किया जाता है. सो नोटराइज मीन्स उसको हम लोग वैलिड रखते हैं. सो इट गेट्स वैलिडिटी इन कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, in court you will get validity for that. Okay, so that dishonor bill ऐसा नहीं होगा कि आपने नोटराइज करके लाया तो क्या हो जाएगा, नोटराइज करके लाया तो वो वैलिड हो जाएगा. सो आप सपोज केस डालते हो, इफ यू फाइल एनी सूट अगेंस्ट ड्रॉवी, देन दैट बिल मस्ट बी नोटराइज, दैट डिसऑनर मस्ट बी नोटराइज. ओके,
तो नोटराइज करके लाते हैं. If bill is dishonor, so you have to visit that notary public, and then notary public will take some charges and he will give it in the writing that this bill is getting dishonored. This bill is getting dishonored. तो वो नोटरी क्या करेगा, वो नोटरी लिख के देगा कि भाई ये जो है ना ये पेमेंट टाइम पे दिया नहीं है. तो एटलीस्ट उसको आप जब केस फाइल करोगे तो वो नोटरी चार्जेस, नोटिंग चार्जेस लेके ये वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो कि देखो मेरा बिल का पैसा इन्होंने दिया नहीं. ओके, गॉट द कॉन्सेप्ट. इफ बिल इज डिसऑनर, लास्ट होल्डर ऑफ द बिल, whoever is the last holder of the bill has to pay noting charges, has to pay noting charges. And this is public official, that is notary public. So you are aware, वो छाता लेके बैठते हैं हमारे पुणे में. So आप लोगों को पता होगा, अभी नहीं, अभी उनको थोड़ा ये दिया गया है, पर आपने देखा होगा कभी भी कि कोर्ट के बाहर ये सब देखे रहते हैं, अपने नोटरी पब्लिक रहते हैं. तो ये वहां पे यस, जहां पे आप लोग रजिस्ट्री करवाते हो आपकी प्रॉपर्टी या किसी की भी, तो वहां पे नोटरी पब्लिक्स रहते हैं. And with reasons you have to give it. And then it is recoverable from the, and whatever notary charges you are paying, recoverable from drawee, recoverable from drawee. So आप वो पैसा भी उसको लगा सकते हो. आया समझ में, वो पैसा भी लगा सकते हो. So that is called as recoverable from drawee. Okay, who will pay this? Last holder. Last holder may be you, drawer, or might be payee, that is endorsee. Endorsee भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, तो उनको ये पे करना पड़ेगा. ओके, और ये किससे रिकवरेबल हो सकता है? लास्ट होल्डर. लास्ट होल्डर कौन कौन होगा? ड्रॉवर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, और एंडोर्सी भी हो सकता है. लास्ट होल्डर, ड्रॉवर, बैंक और एंडोर्सी. यू नो 4 सिचुएशंस. अनमोल, बिल एट साइट मतलब जब भी आप बिल देखोगे आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ड्रॉई को उसका पेमेंट देना पड़ेगा. अनमोल समझ में आया बेटा? जब भी बिल एट साइट मतलब आफ्टर साइट नहीं, एट साइट होगा तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग बिल देखेंगे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एट साइट. Renewal of bill. Now what is renewal of bill? Write down next concept. Renewal of bill. Renewal of bill. When acceptor is unable to pay the amount, write down, acceptor is unable to pay the amount, then extra time is given. Then extra time is given by drawer, including interest. In bracket, write down including interest. Okay. When acceptor is unable to pay the amount, then extra time is given by the drawer. Okay. So drawer usko extra time dega. Okay. So acceptor does not have amount. Drawee does not have amount. Then drawer gives extra time. Kushal Jain, please watch my previous session. Now, if you are asking me, sir, bill sent for collection भी हो सकता है ना? Yes. पर बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल अपने पास ही आ जाएगा. एजेंसी विल गिव यू बिल टू यू ओनली. यस बेटा, बैंक विल पे दी. तमन्ना, वेरी गुड बेटा. बैंक के पास बिल होगा तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा. नोटिंग चार्जेस पूछेगा ड्रॉवर को, ड्रॉवर पूछेगा ड्रॉई को. ओके, सो नोटिंग चार्जेस लास्ट होल्डर पे करता है. वेरी गुड बेटा तमन्ना. देन एक हमारे होनहार स्टूडेंट आज आए हैं, देखते हैं, कुशल जैन करके. एंड कुशल जैन मुझे पूछ रहे, सर ड्रॉई एक्सप्लेन करो. बेटा दीज आर ऑफिशियल क्लासेस इंस्टीट्यूट के, यहाँ पे वही चीजें बार बार रिपीट नहीं की जाएगी. सो यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस सेशन. तो बेटा कुशल प्लीज आप मेरा पहला सेशन देख लो, आपको ड्रॉवर ड्रॉई सब समझ में आ जाएगा अच्छे से. यस बेटा कुशल, तो आप ये बार बार मत पूछो, और ये कोई आपके बाकी के चैनल्स नहीं है जहां पे आके आप फैकल्टी को तंग करोगे और उनको बार बार वही चीजें पूछोगे. तो आप आईसीएस साइट पे हो, इतना याद रखो, बोर्ड ऑफ स्टडीज पे आप क्लासेस ले रहे हो, नॉट कोई प्राइवेट क्लासेस है ये.
तो आप वही चीजें मुझे बार बार मत पूछना, आप मेरे प्रीवियस सेशन देखो। ओके, नेक्स्ट वन, yes, have you written beta renewal of bill? And next one is retirement of bill. Now suppose drawee pays in advance. Okay, if drawee pays it in advance, then beta he will get some discount. Okay, so he asked for 3 months duration. Okay, so bill is of 3 months, bill is of 3 months, and drawee is paying that amount within 2 months. So he's paying 1 month early, so he will ask for discount. So that is called as retirement of bill. So retirement of bill, acceptor has spare funds, so acceptor pays before maturity date. Write down, acceptor pays before maturity date. Write down, acceptor pays before maturity date. So write down the concept. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बेटा ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. सो ही विल आस्क फॉर इंटरेस्ट, ड्रॉवर विल आस्क फॉर इंटरेस्ट. Acceptor pays before maturity date, and here discount oblique rebate. Rebate मतलब ही discount. Discount means rebate is given. क्या दिया जाएगा, rebate दिया जाएगा. Discount और rebate or interest, you can call it as interest also. Premature period के लिए means now who will pay interest? So here this interest is income for drawer. When renewal of bill income for drawer होगा, and in retirement में loss for drawer. So he has to give some discount ना early payment के लिए. So loss for drawer. So remember, in case of renewal of bill, ड्रॉवर विल चार्ज इंटरेस्ट. ओके, ड्रॉवर विल चार्ज इंटरेस्ट. तो ड्रॉवर बोलेगा कि भाई तू मुझे इंटरेस्ट दे, तो ड्रॉवर के लिए इनकम होगा. बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, ड्रॉवर विल पे इंटरेस्ट, क्योंकि अर्ली पेमेंट मिला. आया समझ में, अर्ली पेमेंट मिला. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप मुझे, यू आर गोइंग टू पे मी आफ्टर 3 months. इफ यू आर टेकिंग टाइम, then I will charge you interest. So that interest is income for me. तो आपको मुझे पेमेंट करना है, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि आपको मुझे पेमेंट करना है 3 महीने के बाद. तो आपको मैंने मोहलत दिया 3 महीने का. यू आर पेइंग मी आफ्टर 3 months. ओके, यू आर आस्किंग फॉर 3 months. सर पैसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए, 1 महीना एक्स्ट्रा दीजिए. तो मैं आपको 1 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा, वो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होगा. दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल. रिन्यूअल मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेगा पेमेंट जो देने वाला है, एंड रिटायरमेंट मतलब जो जल्दी पे कर देगा. अभी आपने मुझे 2 महीने में पेमेंट किया, तो मैं आपको 1 महीने का इंटरेस्ट दूंगा. आप मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट करने वाले थे, पर आपने 2 महीने के बाद ही पेमेंट किया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मैं आपको देने वाला हूं. 1 महीने का इंटरेस्ट. सो दैट इज माय लॉस. ओके, सो चलो जल्दी से गिव इट इन मी इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, इनकम और लॉस. इनकम और लॉस, किसके लिए इनकम होगा, किसके लिए लॉस होगा. एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट, किसके लिए इनकम होगा, किसके लिए लॉस होगा. राइट डाउन, यस, राइट डाउन बेटा इन कमेंट सेक्शन, इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल. Now you are comfortable with bill of exchange, beta. It's very simple. Bill of exchange. अभिषेक विश्वकर्मा लिख रहे हैं कि सर सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चैप्टर नंबर 6 हार्ड है, बट आई हैव कॉन्फिडेंस कि संकेत सर
कोई भी चैप्टर को हार्ड नहीं रखेंगे. वेरी गुड बेटा अभिषेक, गुड कॉन्फिडेंस. Yes, very simple. Array something, nothing is difficult in accounts. If you know basic rules of accounts, nothing is difficult. Yes, Sadhna, best of luck, beta. Don't worry. You will get good marks. 12th standard is nothing, beta. Foundation is important. 12th में तो अच्छे marks भी मिले, कम मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता. Focus on your foundation exams. I'm not saying that 12th is not important, but you should know your priorities, ना. Okay. जब मुझे बंगला मिल रहा है और घर भी मिल रहा है, सॉरी 3 BHK और बंगलो मिल रहा है, तो मैंने बंगलो का सोचना चाहिए ना, नॉट फॉर 3 BHK. Okay. So renewal of bill के लिए income for the drawer, very good Swati, and income for drawer and loss for drawee, and retirement of bill में income for drawee and loss for drawer. Very good. सर्वेश ने भी मस्त लिखा एकदम. क्या लिखा? Yes, you can write this in your बेटा retirement and renewal. Renewal में क्या लिखोगे? Renewal. So what is the important? Renewal means late payment. So इसमें drawer का income होएगा and drawee का loss होएगा. He has to pay that interest. And in second situation, in case of retirement, you can write this. In case of retirement, drawer के लिए लॉस होएगा and drawer के लिए ड्रॉई के लिए इनकम होएगा. Yes, you can write this. Clear, beta? Yes. Now I won't take beta all questions. I will take important questions, but I will give you guidance so you can take a screenshot. Abhi 400 pages ke notebook mein aana. And now one more concept is there, only insolvency. So if drawer does not pay the amount, drawee does not pay the amount, in that case, drawee becomes insolvent and we have to pass entry for bad debt. So what is the last concept? Insolvency. What is the last concept? Insolvency. And in case of insolvency by drawee, drawer will pass entry, bad debts, and drawee will pass entry for deficiency. Okay. So last concept is insolvency. तो insolvency, books of drawer में क्या बोला जाएगा? Books of drawer, it is bad debts. Bad debts. And books of drawee, but this is deficiency. Deficiency. Yes. Deficiency and bad debts. Books of drawer, it is bad debts, and books of drawee, it is deficiency. See beta, only 2 minutes का ज्ञान देता हूं. Only 2 minutes knowledge. Remember, whenever you are studying any subject, before starting that topic, ask to yourself why this topic. For example, bill of exchange. When you ask yourself bill of exchange, so why this chapter, logic is very simple. That drawee does not have amount, that buyer does not have amount, and he asks for some dates. Okay, he asks some for credit period. It is called as कि 3 months का time दीजिए, 2 months का time दीजिए. Try to understand these concepts. And whenever he asks you for some extra time, it is called as beta. It is called as due dates. It is called as bill of exchange. And
he is ready to accept that bill. So his balance in your books becomes 0. And instead of that, आपका कौन सा अकाउंट चला जाएगा? डेटर्स अकाउंट आपके बुक्स में से चला जाएगा and bills receivable अकाउंट आपके बुक में चला आएगा. And now that bills receivable book, yes, you have 4 situations. Now, might be he is not paying you in time. If he is not paying you in time, better then you can pass interest entry. It is your income. If he pays in time, before time, then better you have to give some interest. Better you have to pay interest because early payment is for discount. He is eligible for discount. So that discount has to be paid and it is your loss. So nothing is difficult. And whenever he dishonors bill or renews bill, you have to pay noting charges. And noting charges is recoverable from him. So logic is very simple. तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बुक्स में से डेटर्स हट जाएगा और उसके बदले में बिल आ जाएगा. उसके बदले में क्या आ जाएगा? बिल. और बिल के साथ आप 4 सिचुएशंस आप लोगों के पास है और इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर. बट स्टूडेंट्स आर नॉर्मली टेकिंग इट एज वेरी डिफिकल्ट. दे रट्टा मारते हैं, दे बाय हार्ट ऑल दीज एंट्रीज. आई हैव सीन इन माय पुणे ब्रांच फेस टू फेस बैचेस में कि स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. फैकल्टीज भी कुछ भी लॉजिक्स बता देते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे पढ़ते नहीं है. बेटा प्लीज हैव प्रॉपर शेड्यूल. डेली 8 hours स्टडी इज मस्ट फॉर सीए कोर्स. इफ यू स्टडी इन दिस 4 months, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पढ़ोगे, so you don't have to take efforts in the month of May. May is fully for revision. But students are taking it very casually, and that's why CA students are getting less results. Though syllabus and beta, you are getting multiple options for your study, but still there are n number of sources which are available. I remember my days where only one class is there, no YouTube, no nothing is beta. Now social media itna bada ho chuka hai, but you are not taking it beta carefully. Yes, and this is only the reason for your failure. So I request you, all of you, though you are average student, don't take it better difficult wise. Though you are very average students, but try to understand all concepts and please work hard. Okay, hard work is only the success key, important point. And remember, कितने भी तेज होंगे, पर बेटा जीत टॉर्टोइस को होती है, नॉट रैबिट की. हम लोग तो बचपन से स्टोरी पढ़ सुनते आ रहे. तो जो स्लोली करेगा बट हु इज कंसिस्टेंट प्लेयर विल गेट दिस सक्सेस. और जो रैबिट है वो कभी जीतता नहीं है, वो कहां पे जाके सो जाता है. सो एक दिन की मेहनत काम में नहीं आएगी, मेहनत लगातार करनी पड़ेगी. चलिए, ओके, so let's start with question number 1 now. Yes, Ritu Tiwari, very good. Admol Patwaji, bill of exchange ka pro forma and all these things will never ask in CA exam foundation में, accounts में. So it is only for your 11-12 standard में OC और SP ये कुछ subjects होते हैं. So organization of commerce मेरे टाइम पे थे. अभी I don't know whether your syllabus is same. अब बहुत साल हो गए, 25 साल पहले की बात है. So ये मुझे भी याद नहीं है, 20 साल पहले की बात. तो अभी इतना याद रखो कि फॉर्मेट्स वगैरह इज नथिंग बेटा. यस, आप लोगों को मैं ये नहीं सिखा पाऊंगा. बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रोफॉर्मा वगैरह बताइए, आप मॉड्यूल में पढ़ लेना. आई विल टेक ओनली दोज पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी फिलहाल तो. चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1. मिस्टर मेसर्स सुजाता receives 2 bills from Messrs. Aruna on 1st June 2020 for 2 months. How many bills are there, beta? Bill 1, bill 2 on 1st January 2002. The bill 1, I will write BR1, bills receivable 1. So who is drawer? You can write over here, Sujata, drawer, Aruna, drawee, drawer, drawee. 1st January 2022 का बिल था, 1st January 2020 for 2 months. The first bill is of 10,200 and second bill is for 15,000. The second bill was endorsed. Okay, so this bill is endorsed.
with Mr. Shri, and the first bill is discounted immediately with bank. Okay, so BR1 is discounted. Pass entries in the books of Sujata. Sujata books. What is the first entry? Bill drawn. What is second entry? Second entry, bill endorsed. And what is third entry? Bill discounted. Very simple entries. Okay. So very simple question. Bill drawn. So write down the sequence in index. Index में sequence लिखिए. Bill drawn, bill endorsed, and bill discounted. Very simple question. Very simple question. Nothing is difficult in this. Sujata ke books mein. Bill drawn. So I won't take this question, beta. In writing, you can write it afterwards. No, beta. Sujata is a drawer. Sujata is a drawer. Okay. Index में लिख दिया. चलो write down index बेटा फटाफट 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 फटाफट. C category question. Bill drawn, bill endorsed, and third entry is bill discounted. What is the first entry, beta? What is the first entry? First entry will be क्या हुआ? Okay. Bills receivable account debit. 1. Bills receivable account debit. 2. To Aruna account. Aruna is a giver beta. So bills receivable comes in. So you can write it like comes in. Logic is very simple. Bill comes in. And here bank account debit. Bank balance increase. Asset increase. Discount is your loss. And bills receivable goes out. And bill number 2. Creditor becomes receiver. Creditor becomes receiver and bill goes out. So simple logic. Bills receivable 1 account debit. Bills receivable 2 account debit to Aruna. Then bank account debit, discount account debit to bills receivable, and Shri account debit to bills receivable. Yes. So take a screenshot and skip half page, 3/4 page or एक page छोड़ दीजिए for illustration 1. Okay. And come to illustration number 2. So 400 pages notebook. Illustration 1. You can take a screenshot. चलो जल्दी से screenshot ले लीजिए. और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे. यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड्स. ओके बेटा, यू हैव टू राइट इट नाउ और यू विल फिनिश इट आफ्टरवर्ड्स. जल्दी से बताइए. यस यस बेटा. इंडेक्स यू हैव टू प्रिपेयर. रोहित करमरकर. यस बेटा. बाद में कंप्लीट कर लोगे ना ये. चलो जल्दी से बताओ. यस, वेरी गुड वेरी गुड. चलो इलस्ट्रेशन 1 ओवर. एक पेज छोड़ दो. इलस्ट्रेशन नंबर 2. Let's see whether it is a C category. बेटा इंडेक्स आई एम गोइंग टू गिव इट इन राइटिंग, सो डोंट वरी. इंडेक्स में राइटिंग में दे रहा हूं. तो इंडेक्स को मैं राइटिंग में ही दे रहा हूं आपको. ओके.
Second question. Now, again, Vijay sold goods to Pritam. Vijay is a seller or drawer. Pritam, write down, Pritam is buyer and drawee. Yes, Pritam is drawee or buyer. But आज 1:30 तक सेशन है. I will give you break after third illustration. Third illustration के बाद break देता हूँ. Seller और drawer 400 pages के notebook में लिखना है. Then yes बेटा, same logic. 2 pages you have to skip for ILU 2. I'm not giving it in the writing. It's very easy question once again. So Vijay is seller and Pritam is buyer. Understand it quickly. Okay. So first in the books of Vijay. So books of Vijay. So what is the first entry beta? What is the first entry? Sales ki entry. Vijay sold goods. What is the entry beta? Sold goods ki entry. Write down in index. Books of Vijay. In bracket write down drawer. Write down in index. Drawer लिखिए. So first entry books of Vijay drawer. Index में लिखो. 4 pages का index है. Index you know how to prepare it. Index कैसे बनाओगे? Serial number, page number, type. Type नहीं बनाया तो भी चलेगा. Remarks and category. Remarks and category. Sold goods is the first entry. Pritam immediately accepted 3 months bill. Okay. So second entry. Vijay bill drawn. Bill drawn. So first entry beta. Vijay passes entry Pritam to sales. Yes. First we will understand the sequence. Bill drawn. On due date, Pritam requested the bill of new bill. So new bill, fresh period of 2 months. Fresh period of 2 months. So beta, here hidden entry, red pen, dishonor. So beta, first bill, dishonor. First bill, dishonor. This is hidden entry. Then fourth entry beta, we will calculate interest. We will calculate interest entry. So interest entry is a fourth entry. Interest entry, fourth entry. Vijay agree to provide interest in cash. So what is fifth entry beta? Bills receivable drawn plus interest received in cash. Fresh bill is drawn and interest received in cash. Try to understand the sequence. And what is sixth entry? What is sixth entry? Sixth entry is renewed bill honored. So you have to pass 6 entries. Renewed bill honor. So the sequence is very important. Books of Vijay. Interest is income. Here you can write interest is income. Yes. Books of Vijay, sold goods, bills drawn, dishonor, interest entry, bills receivable drawn, plus interest received in cash and renewed bill honored.
नाउ डू वन थिंग, इंडेक्स हो गया लिख के, हाँ आई विल गिव इट इन राइटिंग. फर्स्ट इलस्ट्रेशन 1 आपने छोड़ा होगा. यस, नाउ ड्रॉ फॉर्मेट बेटा, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए. कम टू आंसर पार्ट. फर्स्ट पेज यू लेफ्ट फॉर इलस्ट्रेशन 1. आपने पहला पेज इलस्ट्रेशन 1 के लिए, इंडेक्स 4 पेजेस, इंडेक्स 4 पेजेस. आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन 1 एक पेज, एंड देन राइट इलू 2, इलू 2, illustration 2, write down books of विजय, ब्रैकेट में ड्रॉवर, बुक्स ऑफ विजय इन ब्रैकेट ड्रॉवर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. ड्रॉ फॉर वन पेज, ड्रॉ फॉर वन पेज. चलो स्टार्ट. यस, ड्रॉ फॉर वन पेज. फर्स्ट एंट्री 2020 1st September, 1st September. Pritam account debit. Pritam is a debtor to sales. Sales is our income. Pritam account debit to sales. In exam, don't write debtor income. This is only for understanding. Pritam apna debtor hai. Apply rule. To sales is our income. What is the amount? Amount is 1,06,000. Being goods sold on credit. Being goods sold on credit. Being goods sold on credit. Then on the same date, now write in exam, write full form, but here you can write short form. Bills receivable account debit. Bills receivable account debit. Bills receivable beta comes in. Actually, this is personal account, but for understanding purpose, we are writing it as real account. Okay, bills receivable is a personal. पर understanding के लिए हम लोग इसको real assume करेंगे. And प्रीतम debtor becomes giver. सर के रूल सबको पता है. तो debtor cancel हो जाएगा. प्रीतम हल्के हाथों से cancel कर दो. So now in your books there is no more प्रीतम account, only bills receivable and sales account. 1,06,000. Same date. 1,06,000. Same date. 1st September. Being bill drawn. Being bill drawn. Easy. Being bill drawn. 1st September. Simple narration. Study material में you may have some different narration, but you can use simple narration. Now on due date. Due date is 3 months. 3 months means 9, 10, 11, 12. For December. प्रीतम जिंदा हो गया. बिल डिसऑनर. 2 bills receivable. 2 bills receivable. 1,06,000. Red pen. Being bill, this first bill dishonor,
being first bill dishonored, on renewal of bill, on renewal के वजह से फर्स्ट बिल डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी. सिंपल. 1,06,000. Then again, प्रीतम अकाउंट डेबिट. प्रीतम इज अगेन डेटर, रेड पेन से लिखो, टू इंटरेस्ट income. So for this he is income beta. For him Vijay it is income. 1,06,000 into कितना परसेंट इंटरेस्ट है बेटा? 9% into 9% into 2/12 into 9% into 2/12. Yes बेटा, इंटरेस्ट इज कितना आया रे? सॉरी, 1,06,000 into 9%, 1,590. And now most important entry on 4th December. Now you only tell me. So Pritam ka balance here being interest charged. Being interest charged. अभी देखो प्रीतम 1,06,000 plus 1,590. Now you only tell me what is the balance to Pritam. You can write over here. Pritam debit is equal to, प्रीतम का डेबिट कितना है? प्रीतम डेबिट इज इक्वल टू 1,06,000 प्लस 1,590. 1,06,000 प्लस 1,590, 1,07,590. 1,07,590. सो प्रीतम को डेबिट कितना है? 1,07,590. इतना प्रीतम को डेबिट है. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, you are getting these entries beta. चलो बोलो next entry. Next entry is important. So beta 4th December is after grace days. Yes Aisha, very good. After 3 months grace days लेना है. Is 4th December. Now very very important, Pritam becomes giver, but bills receivable debit 1,06,000. Now this is very important. 1,06,000 we received in cash. So see, Pritam has to be cancelled. Pritam is a giver, debtor becomes giver of 1,07,590. But out of that, cash oblique bank account, interest is in cash, and remaining amount 1,06,000 principal amount is in beta bill way. Okay, so interest he paid in cash 1,590. So cash account debit, and bills receivable 1,06,000. This is one of the important entry. So cash is, interest is in cash. For December. And now (2021) after 2 months, 7th Feb, bank account debit. Here it is beta being fresh bill accepted. ऊपर लिखना था being fresh bill drawn, sorry, drawn, being fresh bill drawn. And last entry, bank account debit to bills receivable 1,06,000. Being bill honored. Being bill honored.
Now everyone is clear with these entries, beta. 4 marks question for Vijay books and 5 marks for Vijay and 5 marks for Pritam. Being bill honored. Being bill honored. बेटा प्लीज लास्ट तक डटे रहो. Don't skip a single entry in option. If you don't understand these entries, you can ask me. सर एक एंट्री नहीं समझ में आया तो. एंड प्लीज डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कीजिए. फर्स्ट यस, हाउ टू प्रैक्टिस बेटा. प्लीज see index. Now bill sold goods. Sold goods Pritam account debit to sales. How to do practice, that also I will tell you. Sold goods index में देखना है Pritam to sales. Bill drawn, bills receivable to Pritam. Yes. Dishonor. Dishonor means उल्टा करना है. Pritam जिंदा हो जाएगा. So Pritam to bills receivable. Okay. Interest की entry. Interest income. Interest income means Pritam to interest. Okay. Bills receivable drawn, fresh bill. Bills receivable account debit. Interest we got it in cash, so cash account debit to Pritam. Pritam zero हो जाएगा. And last entry bank account debit to bills receivable. खत्म. So this is how you can revise your entries. Okay. So now tell me books of Pritam. अभी books of Pritam में क्या होगा? बाजू बाजू में लिखता हूँ. So books of Pritam is your homework. Index में आ जाओ. Index में आ जाओ. Purchase goods. परचेज गुड्स. पहली एंट्री क्या होगी? परचेज गुड्स. देन बिल एक्सेप्टेड. थर्ड एंट्री डिसऑनर. फोर्थ एंट्री इंटरेस्ट लॉस. फिफ्थ बिल अगेन एक्सेप्टेड प्लस इंटरेस्ट पेड इन कैश. And sixth, bill honored on due date. So bills accepted means here it is bills payable. Bill accepted means bills payable. And bill drawn, here it is bills receivable. So these are books of Pritam. Books of Pritam. Okay. So you can think these entries in the. Yes, beta. Sequence, Tamanna, very important. Full clear, sir. नहीं बेटा. Yes, good question. Lisa Jain is asking, sir, 1,07,590 का बिल हो सकता है क्या? नहीं, because specifically question में दिया हुआ है. Specifically question में दिया हुआ है. हाँ, if this sentence is not given, interest paid immediately in cash, तो आपकी बिल अमाउंट कितनी आई रहती? देन बिल अमाउंट ये नहीं दिया रहता तो बिल अमाउंट आपकी आती थी वही वाली प्रीतम वाली 1,07,000. कितना था? 1,07,590. यदि ये लाइन दिया नहीं होता तो. If this sentence is not given immediately in cash, beta, in that case your bill amount will be 1,07,590. But interest is paid in cash, and therefore new bill is also of principal amount 1,06,000. मनीष जैन की क्या क्वेरी है? मनीष जैन आपकी क्वेरी. प्रीतम आस्क फॉर 2 months एक्स्ट्रा बट ही पेड अमाउंट इन 1 month. कहां पे दिया है? द सेकंड बिल वॉज ड्यू डेट पे हुआ ना. फ्रेश पीरियड बेटा 3 महीने खत्म होने के बाद. मनीष 3 महीने खत्म होने के बाद 2 महीने का पीरियड मांगा है. 3 महीने होने के बाद. ऋतु 90% का को पूरा समझ में आना चाहिए. यस बेटा. अकाउंट नहीं, डेबिट और अकाउंट आप लोग फुल फॉर्म में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. अनमोल, अकाउंट आप ऐसा ही लिख सकते हो एग्जाम में, डेबिट भी आप ऐसा ही लिख सकते हो, पर बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखना पड़ेगा. बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखना पड़ेगा. So now you have to think for Pritam in the break. We will take a break of maximum 10 minutes. 12:35 को हम लोग आ जाएंगे. 12:35 to 1:35. Yes, next. आज 30 minutes extra session रहेगा. Please cooperate. I know you are very intelligent students और आपके पास बहुत patience भी है. So patience रखो. We will meet on 12:35. Break ले लीजिए 12:35 तक. सर
Welcome back once again. So your entries will be better. I hope you understood all these entries. Otherwise, you can take a screenshot. So what are the entries? First entry will be purchases entry. So purchases account debit to creditors. That is Vijay account. Purchase to Vijay. So I will write logic for you. On 1st per September, purchases expenditure and Vijay is your creditor. So expenditure account debit hoga, purchases to Vijay, creditor. Creditor becomes receiver to bills payable account. Now balance in Vijay account will be 0. Then bills payable account debit to Vijay. Bills payable cancelled hua. And Vijay once again become creditor. So bills payable will get cancelled and Vijay once again become creditor. So bills payable cancelled. So you can visualize in this way. Then interest expenditure to Vijay. Vijay is a creditor. Now balance in Vijay is 1,06,000 plus 1,590. And Vijay becomes receiver. Cash interest component and 1,06,000 is a principal component to bills payable. It is specifically given in the question. Vijay cancelled. And on due date, bills payable to bank. So bills payable to bank, bills payable cancelled. So here bills payable is a liability, new liability. And here liability cancelled. Okay. So very easy entries. You can take screenshot if you want. And last 3 entries. Now, beta, we do not have time, Jagmeet ji. So you can watch this session once again to recall this. So पूरा वापस नहीं explain कर पाऊंगा. So बहुत simple था illustration number. Please, Jagmeet ji, please watch this session once again. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ. It's okay if you are not getting it in the first stroke. ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, पर आप लोग ये वापस सेशन देखोगे तो यू विल एंजॉय. ओके, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो हाउ टू रिकॉल इट? चलो, लेट्स हैव क्विक रिवीजन. सो व्हाट इज द एंट्री? चलो, विदाउट लुकिंग इनटू आंसर, चलो मैं आई विल गिव यू टाइम टू थिंक. चलो मैं एंट्री बताऊंगा. सो फर्स्ट एंट्री, यू कैन राइट दिस सीक्वेंस इन एग्जाम कि आपको एग्जाम में सीक्वेंस लिखना है ऑन रफ पेज. सो अकॉर्डिंगली यू कैन पास द एंट्री. परचेस की एंट्री क्या होगी? परचेसेस टू विजय. Bill accepted. Bill accepted is a liability. So liability must bills payable को credit and Vijay cancel हुआ. So Vijay receiver. So Vijay account debit to bills payable. Vijay to bills payable. Dishonor reverse entry. Bills payable to Vijay. So second का reverse entry. Then interest is expenditure for Pritham. So interest expenditure account debit to Vijay account. Interest expenditure account debit to Vijay account. Then Vijay account debit to cash component मतलब interest component. And to bills payable, Vijay to cash to bills payable, and last entry will be bills payable account debit to bank. So all 6 entries are very important. So what is important in this question? Get sequence. Yes, beta. You have to write once in the top. चलो, और कोई क्वेरी, शक या सवाल? So let's move to question number 3. Let's move to question number 3. Question 3. On 1st January 2020, Ankita sells goods to. So second illustration क्या था बेटा? Renewal of bill. You can write on the question itself. Second question क्या था? Renewal of bill.
सो सेकंड क्वेश्चन मॉड्यूल पे लिख दो रिन्यूअल ऑफ बिल एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एंट्री डिसऑनर की एंट्री रिन्यूअल में डिसऑनर एंट्री इज हिडन एंट्री डिसऑनर एंट्री इज हिडन एंट्री ठीक है सीक्वेंस लिख देने का और याद कर लेने का पूरा ऑन 1st January 2020 अंकिता सेल्स गुड्स ऑफ ₹5 lakhs टू भाविका अंकिता एंड भाविका दोनों के बुक्स में पूछा है सो अंकिता इज अ ड्रॉवर भाविका इज अ ड्रॉवी भाविका एक्सेप्ट्स इट एंड बिल कितने का था 3 months भाविका एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू अंकिता ओके ऑन 1st March भाविका रिटायर सो बेटा रिटायर किया है बिल रिटायर किया तो भाविका के लिए इनकम हो जाएगा डिस्काउंट एंड अंकिता के लिए डिस्काउंट इज अ लॉस 12% पर एनम 5 lakhs इंटू 1st January का 4th April था बट 1 मार्च को ही पेमेंट कर दिया 1 मार्च को पेमेंट कर दिया मीन्स 1 month अर्ली पेमेंट 1 month अर्ली पेमेंट सो 12% इंटू 1/12 सो 5,000 का डिस्काउंट होगा डिस्काउंट इज ऑफ 5,000 1 month अर्ली पेमेंट 1 अप्रैल था 1 month अर्ली पेमेंट 1 month अर्ली पेमेंट रिटायरमेंट सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ रिटायरमेंट सो टेल मी सीक्वेंस चलो जल्दी से सीक्वेंस बता दीजिए नंबर 1 अच्छा अंकिता बुक्स टेल मी सीक्वेंस sold bill drawn sequence sequence is very easy goods sold sequence is very easy
चलो. So what are entries? Sold, bills drawn, and bill retired. Write down in index. Write down index. Bhavika to sales 5 lakhs. Bhavika is debtor. Sales is income. Bills receivable asset. Bhavika becomes debtor, becomes giver. And bills receivable asset cancelled. Bank rebate is our loss. Rebate is our loss. Okay, so only 3 entries are there. So take a screenshot. Take a screenshot. Yes, 1.5 page for illustration 3 or 2 pages you can leave. चलिए, so next entry will be purchases account debit to Ankita. Ankita is our creditor. Purchases is our expenses. Creditor becomes receiver and bills payable is a liability. And bills receivable is, sorry. Here entry is, here entry is wrong. Bills payable, liability cancelled to bank. Bills payable account, liability cancelled. And bank balance is getting reduced by 4,95,000. Okay, take a screenshot and tell me over in the comment section. Bills payable to rebate to bank. Chalo. Yes. Third entry over. Beta, C category question, not very difficult. So this question is of retirement. Easy. Third one is easy. Che. Ritu, very good beta, easy. Che. Fourth one IMP question. Yes, fourth one is IMP. Still finding difficult beta? No, na, Abhi. Yes, now you can visualize all these entries. So what to do for visualization? Don't worry. Just have sequence. Today, your homework is very easy. Have sequence. And please, all these entries, आप लोग खुद ही को पूछो कि सीक्वेंस के हिसाब से एंट्री करेक्ट है क्या नहीं. बेस्ट सॉल्यूशन, आप किसी फ्रेंड को आपके एंट्रीज दीजिए. यस, अदरवाइज यू कैन गिव योर एंट्रीज टू योरसेल्फ. बिल्स पेबल ना बेटा, बिल्स पेबल कैंसिल करना है ना. काव्या क्या कर रही है बेटा, बिल्स पेबल कैंसिल करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 4. चलो जल्दी से आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे. In next session, I am going to explain you one chapter, goods sent on approval basis, theory part, and we will solve accommodation of bill in next session. So try to finish all these questions, beta. Dimple is saying, sir, this sequence technique is amazing. Thank you, beta. Dimple, it's easy, beta. Sequence याद कर लिया तो कुछ भी नहीं है. Okay.
चलो 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 चलो. Katrak acceptance to Basu. Please, now every one of you. Yes, now this question is IMP1. Fourth number is must question. IMP, mark it as IMP. A category question है शायद से. Third one is B category and हाँ IMP transactions. A category question है. A category question. आज 7 तक कंप्लीट करेंगे, 7 तक. 4, 5, 6, 7. सो एकोमोडेशन बिल नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे. एंड यू कैन वॉच माय प्रीवियस सेशन. तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फॉर एकोमोडेशन बिल. इफ पॉसिबल वॉच माय प्रीवियस सेशंस. ओके. Katrak acceptance to Basu. Now how to think? Books of K. Katrak. Katrak acceptance to Basu means beta Katrak ka acceptance. Katrak ka acceptance means bills payable for Katrak. We are in the books of Katrak. Okay. Case Katrak's acceptance to Basu 2,500, discharge by cash payment 1,000 and new bill for balance plus 50 rupees interest. Now please think it carefully. What is the first entry? First entry, bills payable dishonored. Then what is the second entry? Interest expenditure due. And what is the third entry? Amount paid plus bill discharge plus fresh bill. How many entries are there? 3 entries. आईसीआई ने कितने एंट्रीज करने चाहिए थे? 3 एंट्रीज. पर आईसीआई ने एक ही एंट्री में निपटाया होगा. We passed 4 entries. आईसीआई ने एक ही एंट्री में निपटाया. मैं बोलूंगा मैंने पास किए हैं 4 एंट्रीज. So illustration 4. Write down in index first. Write down in index. Index में लिखिए IMP transaction number 1. That Katrak acceptance. First one. So this is, you don't write this transaction once again. Roman 1. For this transaction, you can write now Roman 1. Roman 1. Roman 1. How many entries you are going to pass? Dishonor, payment, interest, and fresh bill. Can you pass these entries, beta? Can you pass these entries? चलो जल्दी से entries कीजिए. जल्दी से entries कीजिए. चलो write down it in the comment section. Roman 1 की entries. Dishonor, payment. चलो करो फास्ट. फास्ट कीजिए. चलो जल्दी से. डीएससी चा है ना. ओटीपी पाठवून देतो. हाँ हाँ
चलो फास्ट एंट्रीज कीजिए। डिसऑनर, पेमेंट, इंटरेस्ट, फ्रेश। फ्रेश बिल। यस, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री। बड़ा महिमा शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए इन एग्जाम। डिसऑनर एंट्री बेटा, बिल्स पेएबल टू बासु। यस, यू आर करेक्ट, फर्स्ट एंट्री करेक्ट। पेमेंट बासु टू कैश 1000. Then interest to Basu 50. Interest to Basu 50. And last one, Basu to bills payable. Basu to bills payable. Four entries you have to pass: bills payable to Basu, Basu to cash, interest to Basu, and Basu to bills payable. What this concept beta? Easy che? Easy or difficult? Tell me it in comment section. Fast. चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ मेनी एंट्रीज यू आर गोइंग टू पास. बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल डिसऑनर, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु, देन इंटरेस्ट की इंटरेस्ट टू बासु, देन बासु टू कैश, एंड लास्ट एंट्री विल बी बासु टू बिल्स पेबल. बेटा fresh account means fresh bills payable. Fresh bills payable. Fresh bills payable. See beta, we have to pass 4 entries. फ्रेश बिल मतलब नया बिल उन्होंने बनाया. देखो एकदम सिंपल है, प्लीज आईएमपी मार्क कीजिए. कतरक का एक्सेप्टेंस था, कतरक का एक्सेप्टेंस हमारा कैंसिल हुआ. सो कतरक का एक्सेप्टेंस मतलब लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल, सो बिल्स पेबल टू बासु. बासु वापस जिंदा हो गया, वापस जिंदा हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट कैंसिल हुआ. फिर मैंने बासु को 1000 रुपया कैश दिया, तो सेकंड एंट्री बासु टू कैश. तीसरी एंट्री मैंने इंटरेस्ट का एंट्री किया, इंटरेस्ट टू बासु. बासु इज माई क्रेडिटर. ओके, और अभी बिल कितने का बचेगा? 2500 माइनस 1000. कितने का बिल था? 2500 माइनस 1000 प्लस 50, मतलब नया बिल कितने का आया? 1550. नया बिल 1550. इफ यू डोंट वांट टू पास 4 एंट्रीज, देखो अभी 4 एंट्रीज नहीं पास करनी है. सो फर्स्ट एंट्री क्या थी? आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बासु टू बिल्स पेबल, सॉरी, बिल्स पेबल टू बासु 2500. करेक्ट है. सेकंड एंट्री ये ओल्ड है, ओल्ड बिल. अभी बासु को कैश दे दिया 1000, तो कैश 1000. बासु में कितना बैलेंस बचा? बासु क्रेडिट बैलेंस 2500 माइनस 1000, क्रेडिट बैलेंस 1500. तीसरी एंट्री सूच है बासु टू बिल्स पेएबल, ये न्यू फ्रेश बिल 1000. उसके पहले उसके पहले इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु 50 रुपीज. अभी बासु में कितना बैलेंस? क्रेडिट 1500, अगेन क्रेडिट, सो 1550 क्रेडिट. एंड नाउ बासु डेबिट 1550, मतलब बैलेंस 0 हो गया, टू फ्रेश बिल, टू बिल्स पेएबल न्यू बिल
1550. So you can see now. Basu cancelled, Basu cancelled, Basu cancelled, Basu cancelled. So ultimate entry, bills payable, debit, interest debit, to cash, to bills payable. And ICI passed only one entry. Instead of passing 4 entries, ICI passed only one entry. Pani therefore. Pani. Okay. So these are simple entries. Now understood बेटा, क्या अभी भी नहीं समझा, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे. Now it's easy. Yes, very good. We are students of Sanket sir. Then everything will be easy for us. Very good, beta Pramod. Yes, beta. बेटा इंटरेस्ट इज नॉट पेड. हाँ डिम्पल, इंटरेस्ट कैश में नहीं पे किया इसलिए वो बिल में ऐड हुआ. वेरी गुड बेटा डिम्पल, वेरी गुड. इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश लाइक प्रॉब्लम नंबर 2. हियर इंटरेस्ट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ बिल. इंटरेस्ट को हमने बिल फॉर्म में पे किया. वेरी गुड बेटा डिम्पल. आयशा नाउ अंडरस्टूड. श्रुति सिंह नाउ अंडरस्टूड. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो इलू सेकंड इसमें आइए. सो फर्स्ट वन इज आईएमपी था. पूरा का पूरा बुलबुलैया था. रोमन 1 बुलबुलैया. रोमन 2 गुप्ता's एक्सेप्टेंस. बेटा गुप्ता का एक्सेप्टेंस फॉर कतरक मतलब क्या? गुप्ता इज ड्रॉई फॉर अस. गुप्ता का एक्सेप्टेंस मींस गुप्ता इज ड्रॉई एंड फॉर अस इट इज बिल्स रिसीवेबल. फॉर अस इट इज बिल्स रिसीवेबल. गुप्ता के बुक्स में नहीं, कतरक के बुक्स में इट इज बिल्स रिसीवेबल. इजी नाउ, इजी. विच इज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू मेहता was dishonor. Okay, so what is the entry? Endorse bill dishonor. Endorse bill dishonor. Endorse bill dishonor. Bill is not with us. Bill is with Mehta. And Mehta, and now Gupta, beta, he dishonored. So entry क्या होगी? Sir, entry तो आपने बताई थी. Drawee account debit to endorsee. Drawee to endorsee. Now who is drawee? Drawee is Gupta. And who is endorsee? Endorsee is Mehta. Mehta is endorsee for Katrak and Gupta is drawee for Katrak. Drawee to endorsee. Sir, Gupta को डेबिट आएगा. Including last holder will pay noting charges. Who is last holder? Mehta. So Mehta will pay noting charges. He will ask to Katrak. Katrak को पूछेगा 20 रुपए दे. Katrak किसको पूछेगा? Katrak will ask to, very good. Katrak किसको पूछेगा? Katrak पूछेगा गुप्ता को. So entry क्या होगी? गुप्ता 4020 रुपीज टू मेहता 4020. कतरक के बुक में क्या आएगा? गुप्ता टू मेहता. एंड बिल ड्रॉन अगेंस्ट चेक. बिल ड्रॉन अगेंस्ट चेक मीन्स वी पेड हिम इन द फॉर्म ऑफ चेक. सो मेहता टू बैंक. मेहता टू बैंक. 2 एंट्रीज होगी. मेहता टू बैंक. सो सेकंड एंट्री इज इंपॉर्टेंट. बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक. दिस इज आईएमपी. मेहता टू बैंक. मेहता टू बैंक. इजी छे. सेकंड वन इज इजी और डिफिकल्ट वन? सेकंड वन आया क्या समझ में? सेकंड वन इजी. रोमन 2 इजी था रे. रोमन 3 पे आते. एंडोर्सी विल पे नोटिंग चार्जेस. अभी समझ में आया ना? सेकंड वन इजी था. रोमन 3 दलाल रिटायर्स अ बिल. दलाल कौन है? ड्रॉन ऑन बाय हिम कतरक. तो कतरक के लिए, कतरक इज ड्रॉवर. सो कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा एंड दलाल इज ड्रॉवी. दलाल इज ड्रॉई फॉर कतरक. वी आर इन द बुक्स ऑफ कतरक. सो दलाल इज ड्रॉई एंड ही रिटायर्ड बिल. 10% डिस्काउंट. सो 2000 into 10%. वेरी सिंपल. रिटायर्ड बिल, रिटायर्ड बिल पेड. बिल रिटायर्ड. बिल रिटायर्ड. सो व्हाट इज द एंट्री? थर्ड वन इजी है. चलो बोलो एंट्री क्या होगी? प्लीज डोंट रेफर आंसर. थिंक योरसेल्फ. यस बेटा, डोंट रेफर आंसर. व्हाट इज द एंट्री? टेल मी फास्ट. अरे इजी होता है, कुछ नहीं होता है. पहला वाला डिफिकल्ट था. 4 बुलबुलैया. 4 एंट्रीज. ऐसे पास ओनली 1 एंट्री. बासु को ओपन ही नहीं किया.
पूरा क्लोज कर दिया 1200 अकाउंट। चलो 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 फास्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, 1800। डिस्काउंट अकाउंट 200। ये कितना था रे डिस्काउंट? ₹10 डिस्काउंट है, सॉरी 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 सॉरी, ₹10 है, आई थॉट 10%। ओके, 1990, सॉरी, आई थॉट 10% है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। Yes, very good. Everyone answered it. And last one is very important. Now let's see. लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। कत्रक एक्सेप्टेंस टू पटेल। कत्रक का एक्सेप्टेंस मीन्स बिल्स पेबल फॉर कत्रक। डिस्चार्ज बाय पटेल एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कत्रक मीन्स बिल्स रिसीवेबल फॉर सिमिलर अमाउंट। तो हुआ क्या? ये हुआ क्या? लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, बिल्स पेबल जो पटेल को था, हमने क्या किया? मुझे मोदी से बिल्स रिसीवेबल आया था, मैं कत्रक हूं, और यही बिल्स रिसीवेबल मैंने चिपका दिया किसको? पटेल को। पटेल के लिए मैंने एक बिल एक्सेप्ट किया था, तो मोदी से जो बिल आया वो मैंने पटेल को चिपका दिया। ओके, so now there will be no bills payable, there will be no bills receivable. So entry is very easy. Entry, see the entry, bills payable account debit to bills receivable. Bills payable, now no more bills payable, no more bills receivable. Okay, so ये diagram याद रखो. So write down Roman 4 is IMP1. Roman 4 IMP1. मोदी से जो बिल्स रिसीवेबल आया था, वो जो कत्रक ने पटेल को बिल्स पेबल दिया था, ये एक दूसरे के साथ नलीफाई हो गया। सो ये दोनों भी कैंसिल हुए। बिल्स रिसीवेबल इज कैंसल अगेंस्ट बिल्स पेबल, आईएमपी ट्रांजैक्शन। ड्रॉ दिस डायग्राम इन इंडेक्स रोमन 4। रोमन 4 अंडरस्टूड दिस ट्रांजैक्शन? थोड़ा मुश्किल था। यस, इजी। लास्ट ट्रांजैक्शन रोमन 4। रोमन 1 इजी और रोमन 4 इजी। चलो लास्ट 10 मिनट्स बेटा, लास्ट 10 मिनट्स। Bills payable and bills receivable cancelled. Which one is easy? 1 or 4? Easy था ना दोनों भी? IMP है, दोनों IMP। A category question. This is A category question. Fourth one is easy. Very good. Oh, Manish is saying Roman 1 is easy. अरे बाप रे। चलो, yes, last two. Have patience. Only last two. एकदम easy है, एकदम easy है, एकदम easy. Last two, only last two. 5, 6. I know, अभी भूख लगी है। Insolvency and accommodation, we'll do it in the next session. Don't worry. First, I will take goods sent on approval ki theory, and then we'll solve accommodation bill and insolvency in next session. On 1st January 2020, Vilas draws a bill, and you want to pass books entry Eknath mein. Eknath, huh? So Vilas draws bill means Vilas is a drawer on Eknath. Eknath is a drawee. So drawer wants to pass entry no Eknath. Eknath is a drawee. So first entry, bills payable. Eknath accepts bill. 1st January means 4th April. 4th April.
4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल बिल्स पेबल, देन बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट, वेरी सिंपल. सो विलास 2 एंट्रीज पास करेंगे, ओनली 2 एंट्रीज, राइट डाउन इन इंडेक्स बिल्स पेबल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल, अर्ली पेमेंट. चलो 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 चलो, फास्ट फास्ट, ओनली 2 एंट्रीज, राइट डाउन इन इंडेक्स, इंडेक्स में लिख दो सी कैटेगरी क्वेश्चन, विलास रिसीवर, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, bills payable liability cancelled, you can write on module also, to bank and to interest is gain, to interest or discount, early payment income for drawee, early payment, retirement का क्वेश्चन था in the books of drawee. So illustration 5 के ऊपर लिखो retirement, retirement of bill. Easy. Last question of the day. Khatam, khatam, khatam. Last question. In the books of Vilas. In the books of Vilas, same question. Retirement of bill. Drawer. Bills receivable asset. Eknath giver. And discount is loss. Simple है. Z category questions. Both are Z category. So first one, bill drawn. Here it is bill accepted tha, and here it is discount, sorry, retirement, retired. So either discount is loss, drawer के लिए discount loss होगा. ए बेटा easy छे, एकदम easy. अभी कब मिलेंगे? सैटरडे को न्यू चैप्टर प्लस एकोमोडेशन बिल, आईएमपी सेशन है नेक्स्ट सैटरडे, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट. चलो टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट ऑन सैटरडे. थैंक यू.